Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Respect teachers, respect chief guests, and my dear friends. Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is, when does Allah subhanahu wa ta'ala punishment comes? My friends, it is well known that a live electric wire does not forgive on the first time. If one happens to touch a live electric wire for the first time, it will nonetheless cause himself suffering. But Allah subhanahu wa ta'ala habit is that He does not catch man on his first mistake, because He is infinitely very merciful and generous. The Lord says, Inna Allah bin-nasi la-ra'ufur rahim. Verily, Allah subhanahu wa ta'ala towards man, most forbearing and kind. My friends, He does not catch man on his first or second mistake. However, the punishment comes from Allah when a man commits a sin and then another and continuing doing so, and after a certain period, a time comes when the Lord of mercy catches him. Its proof can be found from following the incident in the book of Hadith. A certain person presented before Umar radiallahu anhu. He was caught of charges on stealing. He started saying, "Oh Amir al-Mu'minin, forgive me. This is my first offense." Umar radiallahu anhu thought a moment and then says, "No, Allah subhanahu wa ta'ala does not disgrace a person on his first mistake." So he ordered an investigation. The investigation uncovered that the person was a habitual offender and had been stealing past. My friends, when man gets indulged in his sins, then Allah subhanahu wa ta'ala's punishment comes. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Bala man kasaba sayya." Yes, however committed says, وَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. Who committed so many sins that sins has completely engulfed him. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Those are the peoples who are inhabitants of the fire. My friends, Allah subhanahu wa ta'ala is very merciful. Now I conclude my topic with this poetry. हम करते रहे गुनाह उसने ना की पकड़. हम करते रहे गुनाह उसने ना की पकड़. कितने बड़े हौसले उस परवरदिगार के. तालिब इल्मन यूसुफ अंग्रेजी मस्तक़ीर को तुम्हें खुलास शियर कि अल्लाह ताला च हलीम और करीम, अल्लाह ताला च पन्नन बंदन पेट हिल्म और बुर्दबारी हुन मामले करा कि फर्स्ट मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक, थर्ड मिस्टेक पे अल्लाह ताला की पनिशमेंट नहीं आती है. अल्लाह ताला की पनिशमेंट उस सूरत में आती है कि जब बंदा वहातत भी, जब बंदे के गुनाह इतने हो जाए कि उसकी सारी जिंदगी गुनाहों से भर जाए, और उस वक्त फिर अल्लाह ताला की पनिशमेंट आती है और अल्लाह ताला का अजाब आता है. वरना अल्लाह ताला से बेइंतहा इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम. अल्लाह ताला से बंदन पर रऊफ, अल्लाह ताला से बंदन पर रहीम. सुचिन फौरन पकड़ कर आके, मगर अल्लाह ताला बचीन ये पत्ते से पकड़ इवाच और ये जना सरकश इंसान का साच तो ये नहीं मज इसके नहीं मजबूरी जिंदगी बेइंतहा कराच पत्ते से पकड़ छवा सुच वाली खतरनाक. अल्लाह ताला बचे इस पन्ने पकड़े निश, अल्लाह ताला बचे इस पन्ने अजाब निश, और इस दिन अल्लाह ताला रिज़्क़ काम करने तौफीक और वो इंसान